Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience with us. In case of any queries, do reach out to us by writing us an email on hello@iexamb.com. You can also call us on the number 920-5524028 and visit our website www.iexamb.com. iExamB provides you online courses for preparation of various competitive examinations. अगर आप लॉ ऑफिसर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर फॉर वेरियस बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकिंग एंड अदर सेक्टर्स एज वेल, देन यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट. डेमो कोर्सेज आर अवेलेबल. हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, दैट इज लीगल बी. लीगल बी पे आपको इस एग्जाम से प्रेपरेशन से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो ट्राई टू गेट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वीडियोज फॉर यू. वी ऑल्सो ट्राई टू गेट इंटरेस्टिंग कंटेंट and law preparation content. Similar kind of series I have started in this videos today, that is knowing the easiest way to study for various subjects. अगर आपने बाकी के videos नहीं देखे हैं, then I would suggest you to subscribe to Legal Bee and check out all the remaining videos. Do reach out to us in case of any exam preparation and prepare 50% faster with us. In this video, I'm going to cover today Companies Act. The easiest way to study Companies Act in 10 days is what I am going to tell you in this video today. बाकी के वीडियोस में मैंने हर एक वीडियो में सेपरेटली एक एक सब्जेक्ट डील किया है. डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट, आई हैव प्रोवाइडेड यू अ टाइम शेड्यूल एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल. Important topics with the tentative number of hours that you can require to study that, and ultimately the number of days that you may require to complete that. This can help you in building a schedule for yourself. This can be a tentative guideline for you. Exact तो हर एक के अपने knowledge, capabilities, grasping power and already आपने उस subject के लिए कितना पढ़ा है, इन सब चीज़ों पर depend करता है. So I hope you all are getting help from my videos. So don't forget to subscribe to Legal Bee and reach out to us even in the comment section of our videos. Before we start, I would like to make an announcement. SEBI Grade A Legal Officer notification is out. Students have gathered and geared up their preparation for the examination. So a new batch is starting from 22nd of March. It is a crash course. इसके भी सारे details आप जाके check कर लीजिए website पे, या फिर आप call कर सकते हैं हमें on 920-5524028. Enroll now and prepare 50% faster with us. Before we go ahead, I would like to give you a study tip for Companies Act. Companies Act is a very vast subject. So when you are studying it, you have to use the right strategy. Focus on the parts from where questions are asked in examination. And you have to do this. You have to cover the concepts as well as the procedure. क्योंकि यहाँ पे concept से भी questions आते हैं and procedure से भी. इस act में concept और procedure दोनों का amalgamation है. So you have to do that. Focus on the important areas. Prioritize your studies like that you don't waste much time on the areas from where questions are not asked. You may give time to those areas later, but first start with the areas which are very important and celebrated topics. Along with that, important rules can also be studied, because sometimes an exam rules से भी questions पूछे जाते हैं कंपनी लॉ में. तो आप कुछ टॉपिक्स जो रूल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या आपको पता है कि इसके लिए रूल्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा उसमें भी आप नज़र रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा. दिस इज व्हाट इज द टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर स्टडीइंग कंपनीज एक्ट. Now this is the schedule. Starting with day 1, you can have an idea about the brief legislative history of the act, how this act came into existence and the applicability of the law. Along with that, you can study all the definitions. There is a long list of definitions in section 2. I have given you a short list comparatively, which are the most important. ये definitions आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते. So I would suggest all of you to note down these clauses. Abridged prospectus, all these capitals and share capital, ये सारे concepts I have just named 1 or 2. ये सारे मैं suggest करूँगी आप वीडियो को pause करके नोट डाउन कर लें, या फिर आप PPT को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं. इसको अपने बैराक में मार्क कर लीजिए. Don't forget to study these are very important. 100% यहाँ से questions आते ही हैं. You can denote 3 hours for this. 3 hours are sufficient. Plus minus depending upon your individual. You can make a customized plan for yourself accordingly. Now coming to the second day, you can take up chapter 2, 3 and 4. Now you can see there is a color coding that I have used over here.
The topics which are in dark blue are very, very important. Along with that, I have taken some topics which are important, but you can keep it on a second priority. बट आपको पढ़ने तो है एनीवेज, तो मैंने वो आपको यहाँ पे बता दिया है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है. लाइक दैट वी हैव मेड अ टेंटेटिव एनालिसिस एंड guideline has been set depending upon the previous year papers of various examinations. So chapter 2 can be in the less important category as compared to 3 and 4. So this you can do together on second day in 4 hours. I have provided you for that. Again, plus minus depending upon you. 5, 7 and 8 you can do on the third day. 3 hours are enough for that. 9 and 10 you can do on fourth day. 2 hours are enough for that. As per the topics, these only 2 hours can be enough. Now 5th and 6th day you have to do two areas which are the same area, that is chapter 11, 12 and 13, which you can do for 2 days. Now यहाँ पे भी डिपेंड करता है अपॉन यू कि आप 6 घंटे एक साथ पढ़ना चाहते हैं, 5 या 6 घंटे आप पढ़ सकते हैं, इट्स योर कैपेसिटी टू डू. या फिर कुछ स्टूडेंट्स को लिंक लग जाती है कि वो एक ही बार में पढ़ना चाहते हैं, देन दे कैन डू दैट ऑन द 5th डे एज वेल. और अगर उन्हें ब्रेक करके पढ़ना है, ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो डूइंग जॉब, या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आप डिवाइड करके 2 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं. सो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स very important. Meeting of board and its powers very important. And the 13th one, that is appointment and remuneration of managerial personnel, is very, very important. All these 3 are very important. Questions are asked from here. So I would suggest all of you to do it properly, and you can divide it into 2 days, 5th and 6th. Around 5 to 6 hours can be sufficient for your studies of these chapters. Now coming to the 7th day, you can take up chapter 15, 16, not very much time taking, but 27 is very, very important. Remember, you can do that all together on the 7th day. 27 you have to devote much time because it is very, very important for you from exam point of view, and according to the time taken also many things depend on that. So on 27 you can give sufficient time. NCLT से काफ़ी questions पूछे जाते हैं, so do it properly. चाहिए तो आप उसको 3 से 4 घंटा भी कर सकते हैं depending upon the requirement. Already अगर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है, you can do it in 2.5 hours as well. 8th day you can give for 28 and 29, and that also you have to do only the important areas. स्पेशल कोड्स क्या है ओवरव्यू लेकर अच्छे से पढ़ ले. 29 जो पेनाल्टीज है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पेनाल्टीज है सिर्फ वो ही पढ़े, not everything. Still I have given you 4 hours over there. If you are just focusing on important, या आपने पहले पढ़ा है तो इससे कम टाइम में भी हो सकता है. Now this is how you will conclude. अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, then you have to go an extra mile. ये 8 days इनफ है कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सेबी के लिए ये इतना तो आपको करना ही है. बट अभी उन्होंने जो सिलेबस अपडेट किया था पिछले बार, उसके बेसिस पर मैंने आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा काम दिया है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू चैप्टर 6 एंड चैप्टर 20 on the 9th day. In 4 to 5 hours you can complete that. Chapter 20 winding up may comparatively take more time, but again that is very, very important, so that I would suggest you to give time on the 9th day. Then the last day, comparatively you can complete even in 1 or 2 hours. I have given you a spare time of 3 hours as you can complete miscellaneous topics that day. 10th day को आप chapter 26, that is निधि कंपनीज का सिर्फ एक ही सेक्शन है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हैं या रूल्स हैं जैसे, तो जो जो चीज़ें अपडेटेड हैं उससे रिलेटेड अपने आप को अपडेट कर लें कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो. एंड इवन सेम थिंग अप्लाइज फॉर 21A प्रोड्यूसर कंपनी, उसका भी आप एक ओवरव्यू ले लें. सो दैट यू कैन डू ऑन द लास्ट डे एंड यू कैन जस्ट सम अप विद द स्टडीज ऑफ कंपनीज एक्ट. This is how 10 days can give you a very good grasp over the subject of Companies Act if you follow the right strategy. In case of any queries, do reach out to us even indirectly in the comment section of this video. Thank you everybody, and prepare 50% faster with us at our exam week.